जैसे आप सबको पता है, मास्टर प्लानिंग इज वन ऑफ आवर फेवरेट सब्जेक्ट्स। इस पे हम बहुत बात करते हैं और कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा थीसिस ये है कि मास्टर प्लानिंग ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। कि मास्टर प्लानिंग जो डॉक्सियाडिस और उससे पहले भी लोगों से जो आ गई हमें, जिसमें हमें प्लॉटिस्तान का शौक पड़ गया कि प्लॉट अपॉन प्लॉट बनाना है, शहरों के अंदरून का बेड़ा गर्क करना है और बाहर प्लॉट बनाने है। पाकिस्तान में मास्टर प्लानिंग का जुज ये है कि हमने प्लॉट्स शहर से बाहर बनाने हैं और शहर को फैलाते जाना है, और हमने अपनी अंदरून शहर उसका बेड़ा गर्क कर देना है। हर शहर में हमने यही किया है। इस्लामाबाद एक अजूबा शहर है जहां हमने इस मॉडल को बहुत ही उल्टा कर दिया। इस्लामाबाद इज अ सिटी विदाउट अ सिटी सेंटर। बाद में सोचा हमने तो ब्लू एरिया बना दिया। ब्लू एरिया इज नॉट अ सिटी सेंटर। ब्लू एरिया, city center, as you know what a center is. Center is always the center of a circle or something. Blue area is a line passing through a city center, through a city, which is very strange, which is a very strange way of looking at cities. तो हमारा जो मास्टर प्लानिंग का निजाम रहा है, it's always been that of what do you call it? Excuse me. हमारा मास्टर प्लानिंग का निजाम यही रहा है कि हमने प्लॉट अपॉन प्लॉट बनाना है, बाकी सब काम भूल जाने। हमारे पास प्लॉट्स होंगे, ना उसमें एजुकेशन होगी, ना उसमें जिम्स होंगे, ना उसमें कारोबार होगा, ना उसमें दफ्तर होंगे। पता नहीं लोग कहाँ काम करेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो सेक्रेटेरिएट जहां भी है उस वहां जाएंगे लोग और कहीं नहीं जाएंगे। और कोई कॉमर्स नहीं होगी, दुकानें छोटी छोटी होंगी, शोरूम्स कोई नहीं होंगे, कारफोर आ नहीं सकता, अलफता बस छोटा छोटा एक ग्रोसरी स्टोर रहेगा। दिस इज अ मास्टर प्लानिंग। प्लेग्राउंड्स कोई नहीं होंगे, लाइब्रेरीज कोई नहीं होंगी, कम्युनिटी सेंटर्स कोई नहीं होंगी, पब्लिक स्पेसेस नहीं होंगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज अ मास्टर प्लानिंग। दिस इज हाउ वी लिव, दिस इज हाउ पाकिस्तान गोज। आई फॉरगॉट वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल इज द कार। कोई पैदल नहीं चलेगा हमारे शहरों में, कोई बाइसिकल पे नहीं चलेगा, सारे लोग गाड़ियों में चलेंगे। और घर की डेफिनेशन ये 2 स्टोरी से ऊपर कोई नहीं जा सकता। हालांकि तक लाहौर शहर, पुराना शहर जो है, वो उसमें हर बिल्डिंग 8 स्टोरी की है। फ्लैट्स में लोग रहते हैं, पर हमारे पास फ्लैट्स में कोई नहीं रहेगा। 10 मरले, 5 मरले, 3 मरले, 2 स्टोरी का घर होगा। 2 स्टोरी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बर्तानिया में, अमेरिका में हर जगह टाउन हाउस 5-5 फ्लोर के होते हैं। नहीं, यहाँ 2 स्टोरी होगी बस। 2 स्टोरी का हरफे कुरान है और गाड़ी हरफे कुरान है। ये हमारी मास्टर प्लानिंग है, अनफॉर्चुनेटली। So with this introduction, I'd like to introduce the panel. Nasir Javed sahab, mera khayal nahi aa raha hai. Is Nasir here? If he is here, please tell me. But I think Nasir has backed out. Kind of, so we'll have a Hamlet without the prince. I thought Nasir was going to make a presentation today, but he isn't. So okay. Then we've got Sabui Torshar. We've got, I can't read the name. My mistake, sorry. So we've got then we got Nadeem Khurshid, right? We've got Nadeem Khurshid, we've got Sabui Sarshar, and Naveed al Haq. I don't think of Nadeem Nasir Sabay. So let me begin with you, Sabui. Am I wrong on what master planning is? Has master planning given us the worst cities in the world, ruined our social life, ruined everything for us? Over to you, Sabui. Assalamu alaikum. Thank you for giving me the mic. And yes, you got my name right the second time around. Master planning in people's lives. I think cities are places where people should be happy. Let me open a presentation. And yes, master planning has sort of ruined people's lives, but it's also very much required for people and managing their lives. These are some statistics from the Population Reference Bureau, and it shows us that what kind of population boom we've had and we will be having. So Pakistan has a population of 238.5 billion, which is quite a hefty number. And if you see this next image, in the projected population change, you can see Pakistan is towards the higher gradient medium. And for that, obviously, we need better strategies to look at how we will be accommodating the population that is between 15 to 64 years of age, which makes up
most of the population of Pakistan. Um, So cities have emotional value. After World War II, we had a lot of nation states that were formed. There are all the reds. And initially, master planning was done with a very political mindset, with a very power structured mindset, because when you have new cities or your master planning, you have new nations, there is always this particular hierarchy of power and identity in the social cultural context, in representation of the spatiality and the represented forms, which affect the cities and the architecture that we live in. And it makes up for everyday lived experience. So cities are so very important because that is what we inhabit and what humanity is based on. I'm going to quote Foucault here, where power reaches into the very grain of individuals, touches their bodies, and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learning processes in everyday life. And that is what master planning does. Going to gloss over the next slide, which is Haussmann's Paris. So, starting from the top, South Asia is going to be seeing a lot of population boom. As you can see from this slide, Pakistan being more teal and in a darker tone, expecting a very robust population growth in the next 30 years, with the median age being 15 to 64. So we need to accommodate people who are of that age bracket. And all of those people live in cities. We are a very urbanized nation, or we are going towards urbanization, where 70% of the population wants to live in cities rather than in the rural areas. And master planning, as a consequence, came after World War II, where a lot of nation states were formed, those that are highlighted in red. And institutions and governments took over the job of creating identities for themselves. And cities were the most used medium for their representation, where in the social cultural context, cities are the everyday lived experience. They are a representation of spatiality by the architecture and planning aesthetic. And the representational forms that make up the architecture and the urban forms all allude back to who makes the decision as to what and how the city would be. Because after World War II, master planning left the organic mode of growth of cities and wanted to specify how people should be living. Case in point, also Islamabad, case in point, Brasilia, case in point, Chandigarh, among many others. Because cities are a consequence of power, and power, according to Foucault, reaches into the very grain of individuals, touches their body, and inserts itself into their actions, attitudes, discourses, learning processes, and everyday life. I'm going to again refer to a very historical city, which is Paris, which was designed by Haussmann after the Parisian Revolution, and it was designed to curb revolution, to curb the flaneur way of life, to curb people uprising. And this sort of geometric grid-like formation made it easy for people to police people and to stop dissent and to stop people from rioting, etc., which is case in point, D Chowk in Islamabad, where we have containers every third week, if I'm not wrong, for people to stop protesting and or to limit people's capacity to own the public space. So what should cities be? After World War II, there have been so many failed cases of cities which are not happy places for people. So Sir Norman Foster, who's a very celebrated architect, gave a talk at the UNECE 2 days ago. And he has come up with this plan for what should cities be for 2030 for the European nations. And he says, and I would quote, that cities should have neighborhoods. They should have a relationship of where they are in that region. We should not have unsustainable cities. We should have compact, walkable, pedestrian cities.
And there is no doubt that the importance of public spaces is paramount because that leads to inclusivity. And you cannot have a city without parks and squares, and you cannot have a city where there is not a balance of mobility. Um, Interesting to note is that, let's say, one third of the population owns cars, or 70%, 30% of the population owns cars, but our cities are designed to accommodate cars to 100%. Where do people go who do not own cars? And what if they do not have access to cars? Um, and how should transit be in a city? So there should be a balance between mobility, which is autonomous, self-driven cars, and public transportation. It shouldn't be, a keeling towards one side of the balance. And in wake of climate change, what should cities do? Definitely reduce their carbon footprint. They should have affordable housing. As I said, 15 to 64 is the age bracket that we need to be accommodating for the next, 30 years. There should be mixed use and activity, harkening back to Dr. Nadeem ul-Haq's idea about Andrune Sheher Lahore or Andrune Sheher Rawalpindi. Cities should be resilient in wake of disasters. And cities should not marginalize informal settlements. They should integrate informal settlements, the Kachi Abadis that are already there, because these informal settlements are very, let's say, very important to the overall workability of the city in terms of social, cultural, and economic aspects. So when you do all of this, then can cities have emotional value, which is of hope and of happiness, instead of despair and frustration and non-inclusivity and negativity. So some other points to consider while master planning is economic vitality and social well-being with a sense of connectedness, because cities are behaviorally dictated. Wherever you want to go visit a city, whether it's in Pakistan or out, you want to go to a city where you can walk about. You want to go and see the city and feel the city. You want to partake in the activities. You want to explore key anchors in the city, which can only come about when it is not a dictated, hierarchical settlement. It comes about from the points that I have mentioned beforehand. And one of the things that we are dealing with is sprawl. And we are following in the wake of other cities, China being one, or countries, China being one of those with the highest population growth. It spends 12% of its GDP on climate-related issues as a result of smog, as a result of urban sprawl. Because if you have more sprawl, you have to have vehicles or transportation systems which deal with the connectivity between places, and thus resulting in a larger carbon footprint and also hindering urban cross-fertilization. So what good is great architecture, which is this CGT building, which I actually cannot see if I visit China due to the intense smog. So you can see the correlation between a clearer sky and a not very clear sky. Again, the next picture that I'm going to put up is of Bombay. It looks very nice, the skyline. High rises, mixed use, but what good is it if you have informal settlements which are not integrated? So you are only catering to a certain kind of population or an economic bracket, but you are marginalizing the rest. And that I don't think makes for better cities. In Islamabad, most of us are residents of here. We've seen Kachi Abadis and colonies which have been dismantled or disintegrated, resulting in unhope and loss of livelihood for a lot of people. Why don't institutions and governments think about integration? Why don't they think about, in the master plan, in the larger scheme of things, to make it an organic part of the urban fabric?
And I think that people who are bestowed upon the, let's say, responsibility, or are privileged enough to be in a position to make those decisions, need to be talked to or told, or there should be a cross-political debate on what our city should be and what the future of our city should be. And it doesn't mean that what I feel like what cities should be is maybe the right answer, but there needs to be a certain balance when you are looking at master planning of cities, because you can't leave out certain people and integrate other people. And you can't leave out the concerns for the future that we have, which are related to climate, which are related to how the city will sustain itself in the years to come. And why don't we have cities which are happy places, which I would want to visit, which somebody else would want to come in and feel good in? This next figure is a continuation of the same. So this is a percentage of the area allocated to people in Islamabad when it was being built in 1960 to 1964. And the idea or the premise of Islamabad was to also house people who were unsettled. And the people making Islamabad, look at that sliver of the pie, the amount of finance and the amount of space that they were given is very marginalized as compared to the commercial, the government offices, and the residential area for government personnel. I think that that should have been a bit more. And this is what we see in continuation. So afterthoughts resulted in the sprawl, the non-accommodation of activities, the redesigning of the Blue Area Strip, etc. So I'm going to refer to somebody, which is Peter Calthorpe, and this is what the Beijing government has come up with as new measures for accommodating their cities. So you preserve the heritage, you mix use, you make cities walkable, you give accommodation for biking, you connect, you focus, and you have a transit hierarchy, which is related to urban mobility and transportation. This next image is of Brasilia, again, a modern planned city. And with these images, you can see that whoever is now thinking about cities is thinking about all of these points. So office spaces on the upper floors and social integration on the lower floors, public space, inclusivity, small centers which breed happiness and social inclusivity. And the next image that I'm going to pull up is of the Neom city, which is doing the same, but in a very vertical format, spearheaded by Mohammed bin Salman's vision. If you've not heard about it, it is a long kilometers, multi-kilometer stretch city, which socially integrates on a vertical level. And it is an introverted city. And it is a city which is supposed to be sustainable. So those were my 2 cents of thought on master planning. I will give the mic back over to Dr. Nadeem Al Haq. Thank you very much. So, boy, can you just tell me, do we need master planning? We do need master planning, but we need thoughtful master planning. We need integrated master planning. We need. So you mean we need a saint and a Plato and everything No. combined? Can you find me? Can you find me the saint that will do master planning for me? Are you telling me that I surrender my life to these characters who've been through 2 years of master planning and UET, and they will run my life for me? Is that what you want? No, I don't want that. I would like to think of myself as an idealist, realist. So you get the right people to come to. I know. I see the sarcasm in your expression. It is institutional, and it is where policies are made that this can stem from. So the policymakers need to be made aware of
what they're doing, and Maybe that the it has a problem, profound impact on people's maybe lives. the problem that I have with policy is, आपको याद होगा, there was an Indian movie song long time ago, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं, ठीक है? मुझे ये बताएं कि मैं वो मास्टर प्लानर कहां से लाऊं जो हमारी जिंदगी संवार देगा। देखिए, आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली हम इकोनॉमिस्ट ने सीख लिया लॉन्ग टाइम अगो। We were also into planning until we realized कि hell, we are not gods. We don't know how to plan people's lives. People want to live in the way they want to live. तो मास्टर प्लानिंग में कब आएगी ह्यूमिलिटी कि वो समझे कि they are not gods. They can't tell me where to put my bathroom and my bedroom and where should I bloody well even sit and talk and behave. I mean, you're controlling my life. Is that a good thing that master planners should do? It's happening anyway. Why not find a way to rectify it and make it better? Because it's going to happen. Naveedul Haq Saab, aap bataiye, what's your take? I think we should send master planners to Timbuktu. We can arrange our own. Hopefully I am not. अच्छा जी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके। फर्स्टली तो वो जो था कि डू आई सरेंडर माय लाइफ फॉर दोज हु हैव स्टडीड फ्यू इयर्स मास्टर प्लानिंग इन यूईटी। यस, यू आर राइट। जब से ये स्लोगन हुआ है इंक्लूसिवनेस का, हम सब ने मिलकर ही मास्टर प्लान बनाना है और हर एक का कंट्रीब्यूशन वही है जो कि जितनी के उसकी मास्टर प्लान में प्लेस है। क्या हम हॉस्पिटल चले जाएं तो अपनी लाइफ, अपनी पॉकेट, अपना सारा कुछ सरेंडर नहीं कर देते हैं उस डॉक्टर के सामने जिसने चंद साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ होता है? बिकॉज के हम ये बिलीव करते हैं कि वो इस चीज का एक्सपर्ट है। अगर हमें ये फील होता है कि ऐसे अर्बन प्लानर हमारे पास नहीं है जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, तो तब भी हमें मास्टर प्लान को सरेंडर नहीं करना है या मास्टर प्लानिंग को नहीं छोड़ देना है। हमें अपनी क्वालिटी को एनहांस करना है। हम अगर बाकी प्रोफेशंस में क्वालिटी को उस लेवल तक लाए हैं जहां पर हम अपने प्रोफेशनल्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस फील्ड में भी ये पॉसिबल है कि जो भी हमारे डाउट्स हैं या ट्रस्ट गैप है उसको मीट करने के लिए हम उस पर इन्वेस्ट करें और उसकी क्वालिटी को एनहांस करें और एक ट्रस्ट क्रिएट करें। बाकी नदीमुल हक साहब ने एग्जांपल दी थी कि हम इकोनॉमिस्ट ने सीख लिया है। भाई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 100 साल पहले का ग्रेट डिप्रेशन क्या था, वो आप इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डुबो दिया था। लोगों के हाथ में पैसे थे और खाने की चीजें अवेलेबल नहीं थी। पूरी दुनिया किचन, जॉब, अर्निंग, हर चीज से तंग थी। ये आप इकोनॉमिस्ट का किया, 300 साल की मेहनत करके आप इकोनॉमिस्ट ने ग्रेट डिप्रेशन को अकर करवाया। तो भाई प्लानर्स को भी 100 साल की या अभी तो प्लानर्स को पाकिस्तान में आए हुए 51 में वो यूनिवर्सिटी आई या 61 में जिसका आप हवाला दे रहे थे, तो भी 50 साल हुए हैं। तो प्लानर्स को भी 100 साल तो दे देना कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें और इतना तो मार्जिन चले ग्रेट डिप्रेशन जितना पुअर पैथेटिक कंडीशन में ना लेके जाएं, लेकिन कुछ पैथेटिक कंडीशन में ले जाने की तो उन्हें इजाजत दे दें ताकि उस एक्सपेरिमेंट से सीखते हुए वो किसी ऐसी स्टेज तक आ सके जहां वो कंट्रीब्यूट कर सके। ये इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर मेरी तरफ से तो ये हमारे जो शहर हैं, मैं कहूँ हमारे गांव विद 15 मिलियन बंदे, जिनमें ना एजुकेशन फैसिलिटी है, जिनमें ना दफ्तर है, जिनमें ना क्या कहते हैं कोई लीजर की जगह है, जिनमें गाड़ियां भागती फिर रही हैं जिनको भागना भी नहीं चाहिए, जिनमें फ्लाईओवर्स पूरी दुनिया से ज्यादा है। लाहौर और कराची में पूरे यूरोप से ज्यादा फ्लाईओवर्स बन गए, जिनमें सिर्फ गाड़ी फिरती है, मैं पैदल नहीं चल सकता। ये भी कह रही थी सुबह बीबी के पैदल चल सकते हैं, पैदल नहीं मैं चल सकता। फ्लेवर कोई नहीं मिलता। कराची आता हूँ मुझे रोना आ जाता है, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लाहौर आता हूँ तो फिर रोना आ जाता है। इस्लामाबाद आता हूँ, आई एम एक्सक्लूडेड। ये जो शहर में मास्टर प्लानिंग ने दिए हैं,
इसमें तो जी चाहता है मास्टर प्लानिंग तो कूड़े में फेंके। फिर मास्टर प्लानर्स ने ये भी कर लिया है कि वो कहते हैं कि जी बस हमारी इजारादारी है, शहर कोई नहीं बना सकता सवारे हमारे। देयर इज द ट्रेड यूनियन ऑफ मास्टर प्लानर्स जो कहते हैं कि प्लानिंग सारी हमारे हाथ में। ये कहाँ का निजाम है? लाहौर शहर का, पुराने शहर का, किसी पुराने शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं था। क्यों जी सब? ये बीबी वाज देयर अ मास्टर प्लान ऑफ एनी ओल्ड सिटी दैट वी एंजॉय? लंदन ले ले, बर्लिन ले ले, कोई भी ले ले। मास्टर प्लानिंग इज ओनली अ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। और No, master पाकिस्तान में planning as we see today is, but most old cities were planned according to a vision. जैसा फतेहपुर सिकरी है या ओल्ड दिल्ली है, there was always a sense of how you were going to accommodate the people that lived there. Even in the older towns, after the Great Fire of London and also of Chicago, these cities were also planned. and yet let me point you to the BBC documentary on London at the turn of the century, right? Where it was the filthiest, most horrible city in the world. And that what you're talking about exclusion, let me point you towards Oliver Twist. Who was Fagin? Who was Oliver? Let me point you to David Copperfield. देखिए, his cities की history जो है human history है. And it is always messy. There is no such thing as a clean planned city. That's the biggest nonsense in the world. Just like I'd like to plan economies, there's no such thing as a planned economy. So ये जो हम myth pervade करते हैं only because of our own desire to sell ourselves in a trade union, I don't buy it. Sell it to me, I'll believe it. बताइए नवीद साहब। सर इसमें गुजारिश ये है कि पहले तो उन तीनों एग्जाम्पल से मैं बात करना शुरू करता हूं जिनकी आपने दी। इस्लामाबाद का 1960 का वो प्लान, मास्टर प्लान जो डॉक्सी एडस और उसकी टीम ने बनाया, वो 102 रिपोर्टों पे मुश्तमिल है। उसकी चंद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, उनमें से गो थ्रू हो तो अंदाजा होता है, सारा मास्टर प्लान ना भी पढ़ें तो अंदाजा होता है कि इस्लामाबाद को एज ए कैपिटल सीट, और अगर हम माइक्रो लेवल की एग्जांपल लें, एज ए ड्राइंग रूम डिजाइन किया गया है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें यानी के विदाउट ह्यूमन बीइंग्स इन माइंड, आप यानी कि ऐसे बच्चों का खिलौना, गुड़िया का खिलौना या लेगो लैंड डिजाइन किया गया, कैपिटल सिटी बनेगी। हाय, व्हाट इज द कैपिटल सिटी? आई डोंट नो व्हाट अ कैपिटल सिटी इज। अ सिटी इज अ सिटी। What nonsense is this capital city? Doxiadis, who was Doxiadis? Doxiadis was a USAID consultant. Doxiadis को ग्रीस में कोई काम नहीं मिलता था, USAID ने उठा के उसको बना दिया, हमने उसको अपना लिया। Doxiadis हमारा ग्राई था ना, टंडो आदम जान से था जी। I'd like to add something here. So my research is on Islamabad and the power and politics that led to its being. So obviously, as most capital cities, it was the vision of a living organism के capital तौर city to establish an living identity. And sorry, नवीद साहब ये बोल रहे हैं, फिर आप आ जाएं। चलिए जी, हाँ बोलिए। अच्छा, Islamabad, the Doxy artists wanted a very humanitarian design. उन्होंने sectors self-sustaining बनाए थे, जो small. If you read the reports, he wanted that neighborhood, that walkability. But the policymakers made decisions which were not in accordance with what he had planned. So the actual planning of Islamabad, as Doxy artists would have been very different. There were pedestrian walkways into सबोई बीबी डॉक्सियाडिस एक बर्फ का सांचा बना रहा था जी, जो आइस ट्रेज नहीं होती, जो एक एक क्यूब होता है, डॉक्सियाडिस वो सांचे बना रहा था। हमें कह रहे थे तुम सांचों में रहोगे, मैं एक बर्फ की डली में रहूंगा, आप दूसरे बर्फ की डली में रहेंगे, हम आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमारी दोस्ती भी नहीं होगी क्रॉस दैट। ये क्या निजाम है, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्सियाडिस ये क्या कोई खुदा था? Was Doxiadis what was he? I don't understand. हमने Doxiadis को इतने pedestal पे बिठा दिया। To me, Doxiadis was a fool. No, I think he was given the jurisdiction to play with people's lives who are going to be living in Islamabad. Exactly. Anybody else could have also been given that. Wonderful. He continued the Orientalist tradition कि I will play God, I will play white God with black people. ठीक है? So he put us in bloody sanchas.
and like suckers, we fell into sanchas. F6, F7, 8, F9, 10, 11. संचय हैं यार. ये कौन सी अर्बन प्लानिंग है? मुझे कोई शहर बता दे जो इवॉल्व हुआ है ऐसे चीज में. Cities evolve. Cities don't get stuck in sanchas. This is our fault. Yeah. But then if you think ahead and try to integrate, you might get a better result. क्योंकि we are married to doxiadis now. कोर्ट्स कहते हैं doxiadis की बाइबल है. बाइबल को नहीं आप छेड़ सकते. नवीद साहब बताइए, आपका ख्याल है doxiadis के बाइबल को हम छेड़ सकते हैं? सर बिल्कुल छेड़ सकते हैं. लॉ हमें प्रोविजन देता है कि हम हर 20 इयर्स के बाद मास्टर प्लान को रिवाइज कर सकते हैं. रिवाइज करके हम उसे इन एनी एक्सटेंट उसमें चेंजेस कर सकते हैं. अब ये पहले तो मैं आपकी उस बात को सेकंड करता हूं कि वाकई उसने हमें सांचों में ये ग्रिड आयरन पैटर्न देकर उसने हमें सांचों में लिवेबिलिटी उसने नेबरहुड पे महदूद कर दी. शहर के अंदर लिवेबिलिटी है ही नहीं है. और हम इतने सांचों में इस्लामाबाद में बटे हुए हैं कि ये शहर नहीं है. उसका अपना डिजाइन कहता है ये ड्राइंग रूम है, इसमें लिविंग रूम का फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता. अच्छा, अब मैं इसकी तरफ आता हूं जो आपने क्वेश्चन किया. यस, वी कैन चेंज इट. 1992 में मेजर चेंज इसमें की गई. ये मास्टर प्लान की अगरचे 20 साल के बाद रिवीजन होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट हुई. इस रिवीजन में इस एक और इंस्ट्रूमेंट जोनिंग इंट्रोड्यूस करवाया गया. उस जोनिंग के तहत डॉक्सीएडस के उन सांचों को, उन डब्बों को जोन 1 तक महदूद कर दिया गया. जोन 2 में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई. जोन 4 और 5 के अंदर फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई. ये आगे अनफॉर्चुनेट हमारे पार्ट के ऊपर है कि हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए इस शहर को डायनापोलिस में अभी तक कन्वर्ट करने में नाकाम है. तो डॉक्सीएडस का लिखा हुआ कतन बाइबल नहीं है, वो 92 में मेजर चेंज गुजर चुका है. अगर मैं अपने सर आपकी आवाज सुनाई. सर जी, मैं क्या करूं? मैं अपने घर पे अगर एक टीवी लगाना चाहता हूं तो आप लोग मुझे 6 महीने का चक्कर लगाते हैं, रिश्वतें लेते हैं और मुझे तंग करते हैं कि तू नहीं बना सकता. अगर मेरी फैमिली 10 बच्चे हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, मैं कहता हूं पर 2 फ्लैट बना दूं, आप कहते नहीं बना सकते. ठीक है. अगर मैं कहता हूं मैं अपने घर में रेस्टोरेंट बना लूं तो जज साहब कहते नहीं बना सकते. ठीक है. तो मेरे घर में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय इसके कि बस मैं रहूं और बिल्कुल एक स्टैटिक तरीके से गुड़िया की तरह से रहूं. मैं गुड़िया हूं आपके लिए, मास्टर प्लानर्स के लिए. आई एम अ डॉल एंड यू वांट टू ट्रीट मी लाइक अ डॉल. यू वांट टू से कि नहीं जी, मैं ये कहूंगा. मास्टर प्लानर की यह हालत है सुबह बीबी के मैकडोनल्ड को, जब नया मैकडोनल्ड आया लाहौर में, तो मास्टर प्लानर ने कहा तुम किचन राइट पे नहीं बना सकते, लेफ्ट पे बना सकते हैं. इट टुक द गवर्नर, द प्रेसिडेंट टू ओवररूल द मास्टर प्लानर. यार ये मास्टर प्लानर तो एक गॉड बन गया हमारा. ये क्या कर रहा है मास्टर प्लानर? इसकी एजुकेशन क्या है? ये करता क्या है? व्हाट डज ही डू? मुझे समझ ही नहीं आती. हाउ डू दे नो हाउ वी शुड लिव? प्लीज, व्हाट इज दिस मास्टर प्लानिंग आर्ट? मैंने यहाँ इसी तरह मैंने आपके दुनिया के बहुत बड़े बड़े मास्टर प्लानर्स से बात की है. मैंने बात की है, क्या नाम है, ये कनाडा का बेंटोडेरियन से बात की है, वो बात की है, टोरंटो वाले से बात की है, हमने पता नहीं उम्र कितने लोगों से बात की है. वो सब मानते हैं अपना गुनाह, वो इतराफ करते हैं अपने गुनाह का. एक पाकिस्तानी मास्टर प्लान सिर पे चढ़ा हुआ है. वो कहते हैं, वो जो एक और बंदा है एलन बर्टोड, वो तो कहता है मास्टर प्लानिंग जब तक इकोनॉमिक्स नहीं सीखती उसको कुछ नहीं, उसको करना ही चाहिए मास्टर प्लानिंग. अब मुझे समझ नहीं आती. आपने एक चीज की है, एक कंपनी है दारुल दंदासा वाली कंपनी है, वो मास्टर प्लानिंग कर रही है लाहौर की. उसकी कोई एक्सपर्टीज क्या मास्टर प्लानिंग लाहौर की कर रही है, वो तो क्या करेगी? उसको अपने मिडिल ईस्ट में तो मास्टर प्लानिंग करनी नहीं देते, तो हम यहाँ करवा रहे हैं. और मास्टर प्लानिंग क्या करेंगे मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती. प्लीज एक्सप्लेन टू मी सबई बीबी वन लास्ट टाइम, व्हाट डज मास्टर प्लानिंग डू? व्हाई डू दे हैव द मोनोपोली ऑन प्लानिंग सिटीज? जबकि मास्टर प्लान के निकले थे तो मैंने कहा था PIDE भी इन्वॉल्व होगी इसमें. मुझे रोक दिया गया, नहीं सिर्फ टाउन प्लानर्स कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. ये बदमाशी जो है, this is badmashi as far as I'm concerned. There is no reason why master planners should have a monopoly. Why can't I plan the city of Islamabad? Please tell me. So they should have a monopoly. I completely agree with you. But a master planner is somebody who is being given, again, the jurisdiction
to plan people's lives, but the directive is coming from somebody else. There's always somebody else making the decision to tell you how a certain city should be. For example, if somebody comes to me to design a house, to get a house design, they tell me what their requirements are. And then it is my job to translate those requirements. So master planners should be given a consolidated set of requirements which is sensitive to people. That's where institutional power comes in. They are a tool to solidify or visualize somebody else's directives. So yes, they should not have a God complex and they should tone their egos down, but there's always somebody else who's telling them what to do. And it should be a directive which is given to them, which is well thought out. It That's can't why not be that's without why one. that's why we economists gave up planning. We realized that's why we economists started believing in the free market, because we are better off being free I market. agree, but you have to, let's talk about Islamabad's urban sprawl, and where the prices of plots are skyrocketing and a lot of people are hedonistically capitalizing on it. There's somebody in charge who is letting that happen. And a Yeah. master plan would or might change that for the good of the people, so that No, market it's a economy master doesn't plan crash in the, Bhoi, let's say, it's a master next plan 20 that's years. caused it. It's the master plan that's caused it. If you It is the don't master plan that allow, caused it, if but you how do we don't, mitigate the consequences now? no, That also can be a result of good master planning or good policy. I'm sorry. There's no such thing as a good monster. Master planning is a Frankenstein that's got out of hand. Master planning is a huge disaster, and I think it's time that people recognize the disaster master planning is, and let the market prevail. Master planners should not tell us how to live. Master Who should? planners have only one job. Master planners should only plan their work, which is providing infrastructure and managing their own job of providing the Agreed. services that people need. Let Agreed. people build 20 stories if they want to. Master planner's job is to provide the services for the 20 stories, not tell people, hey, because I can't do my job, you live in 2 stories. That nonsense has to stop. Because I can't do my job, I don't want you to build a school. That's wrong. They should build. अगर school बन गया है, उसके इर्द-गिर्द जो infrastructure चाहिए वो बनाएं. ये master planning का काम है. Master planning का काम ये नहीं हमें बताया ना. Amir Durrani is getting very impatient. Yes. Amir Durrani साहब बोलिए. So thank you very Durrani much. साहब. It's not that I'm getting impatient. It's been 44 minutes, and I think nobody is accepting the main point, which I think I truly have begun to understand. I am also a UATian to start with before I went to Austin. So Dr. Naveed Saab, maybe we do know each other. I was trying to recognize you. So I had a department in UAT called the City and Regional Planning, and UAT was initially McLagan College. So it is not something that started in the 60s. But let me get to the core point. I think what Nadeem is trying to say is very important, Sadui, which is that master planning anything is almost like playing God. And, as I would say, Nauzubillah, हम ये कह रहे हैं कि कुदरत को मास्टर प्लान किया गया है. भाई हमारे में ये मैं पहले अपने मौलवी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, first and foremost, I think this is hearsay, and anyone who says master planning is required of human lives is actually committing hearsay. If I was in the 15th century, that's my line. But I am in the 21st century, so hear me out. 21st century is about creating consensus amongst people as to how they want to live. This is not a century where you come in and you decide that I will plan how you live. Well, I say you can't. And just because you're employed by CDA and you responded to some ad and you were employed as grade 17, I mean, this does not make you a master planner. The issue is very, very simple. Number one, cities, no matter how well planned, have evolved organically. आपने फतेहपुर सीकरी की एग्जांपल दी, आप हर चीज के लंदन की एग्जांपल दी. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ वापस आके, ये जो नियम बन रहा है, नियम is nothing but a man playing God. I mean, if you ask every average person,
90% of human beings on this planet Earth, if they had a voice, would tell MBS that this is man playing God. You know that, Naveed knows that, Nadeem knows that. So then what is the issue? I think master planner की जो terminology है ये अब खत्म कर देनी चाहिए. There are a lot of sciences that have now gone totally obsolete. What we need is people who can provide services where and how people choose to live. That is the crux of what is needed. Look at Dubai. You see, I have been going to UAE since 1991, have been living on and off there since 1994. And let me just tell you, did you see Dubai stick to any master plan? Dubai is actually, the whole economy of UAE is a controlled economy. It's a corporation run by a single family. Even there, they could never really have a master plan. Whenever they decided they want to have flying cars, they wanted to have a metro, but even in a controlled place like that, do you know the trouble they had to go through when they thought of the metro way after the entire master plan had been done? So my submission, sir, is that there is no such thing as master planning. There is no such thing as town planning. There is something, however, which is called provision of services in towns and villages and in urban areas. I think this is just a grandiose title, and I will not even go into the history of Doxiadis, because he had no degree in town planning. He was an architect. I like architects. I love architects. But you can't give one architect the idea or power. And last point, Sabui, you said something very important. What is a plan? Somebody sits there and says, do this for me. अब मैंने जूता बनवाने जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए किकर बूट चाहिए आगे से चोंच वाले, because I'm very impressed with that Wizard movie. So that's my choice. But how can a few people's choice prevail on everybody? This is the fundamental issue here. Thank you very much, sir. एक तो दो चीजों को सेपरेट करने की जरूरत है. जो एग्जांपल्स आप कोट करते हैं, मुझे इस तरह का घर चाहिए, मुझे 2 स्टोरी से ज्यादा रहना है, मुझे वर्टिकल जाना है, ये मास्टर प्लानिंग नहीं है. ये लेआउट प्लान्स हैं. इन लेआउट प्लान्स को डील की कोई मास्टर प्लान डील नहीं करता, इनको डील करता है वो सब्सिक्वेंट बायलॉज डील करते हैं, बिल्डिंग बायलॉज डील करते हैं. सो पहले तो ये जो इंटरमिक्सिंग है इसको हम क्लियर कर लें कि बिल्डिंग बायलॉज और इंडिविजुअल बिल्डिंग्स, इंडिविजुअल चॉइसेस ये अलग है और मास्टर प्लानिंग अलग है. और उसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, हर डॉक्यूमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है. और तीसरी बात जो कि मेरी चॉइस, देखिए पहले अभी जो लाहौर में मास्टर प्लानिंग की जा रही है, दारुल हंसा जो मास्टर प्लान बना रही है, इसके अंदर 12 पब्लिक हियरिंग्स हैं. मास्टर प्लान स्टार्ट करने से पहले पब्लिक हियरिंग की गई कि आप क्या बनवाना चाहते हैं. दरमियान में हर 1 माह 1.5 माह के बाद एक पब्लिक हियरिंग की जाती है और बाकायदा एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके जरिए लोगों की प्रेफरेंसेस, उसकी फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ सॉर्ट आउट करके व्हाट शुड बी द मास्टर प्लान, वो लोगों की, देखिए इंक्लूसिवनेस यस लेट आई है मास्टर प्लान में, बट आ चुकी है. इस प्रोसेस को इवॉल्व हो इस हद तक होने देने की जरूरत है जहां इंडिविजुअल आदमी ये फील करे कि उसकी से मास्टर प्लान में शामिल है. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी लोगों को हो सकता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी मींस लॉट्स ऑफ पेपर वर्क एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज. एक बिल्डिंग प्लान अप्रूव करने की मतलब 6 महीने लग जाते हैं. दूसरे मुझे बताएं, ये जो आपने मास्टर प्लान में सारी कौम को गाड़ियों में चढ़ा दिया, ये कहाँ की शराफत थी? अब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है वो जनाब ऊपर चढ़ के नीचे उतरना पड़ता है. अगर ये मास्टर प्लानर, मैं कहता हूँ यूएटी का डिपार्टमेंट बंद करो यार, काफी हो गई है. जब इनको पता ही नहीं ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं. आपको मेरा ख्याल है मास्टर प्लानर्स को एक चीज ले दें, आपको लेगो के डब्बे ले देते हैं, आप आराम से उस पर खेलें लेगो के डब्बों के साथ, क्योंकि हम लेगो की डॉल्स नहीं है भाई, वी आर ह्यूमंस. उसमें आप अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए रहे. वी आर मेसी पीपल. एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो बहुत मेसी होता है. बच्चे का याद है डायपर बैग्स वगैरह सब कैरी करने पड़ते हैं. हम भी बच्चे हैं यार, हमें खेलने दे. हमें ये जो आपने बनाया हुआ है मुसीबत में, इसमें हम क्या करें कि जनाब नहीं, आपने यहाँ रहना है, आपके पास दुकान भी नहीं हो सकती, आपने दूध लेना है तो 5 मील दूर जाना है, आपने दफ्तर जाना है तो 10 मील दूर जाना है, सारा दिन आप गाड़ी में भंबीरी की तरह घूमते रहे.
ये मास्टर प्लानिंग है? दिस इज रिडिकुलस। और ये जो पब्लिक हियरिंग की आप बात करें, व्हाई शुड आई गो टू अ पब्लिक हियरिंग? मैं फरियादी बन के जाऊं पब्लिक हियरिंग? क्यों जाऊं पब्लिक हियरिंग? एक फरियादी की तरह जाना है। दारुल दंदासा जो है, दंदासा बैठा हुआ है लेबनान में, दंदासे को कोई और एम्प्लॉय नहीं करता, हमने एम्प्लॉय कर लिया। दंदासे के पास क्या है? दंदासा पहले मेरे से आके बात तो करे ना। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिंक टैंक हूं। दंदासा को मेरे पास आके परमिशन तो लेके वो कर सकते कि नहीं कर सकता? कमाल लोग हैं यार हम, कि दंदासा को पकड़ लिया। मुझे याद है दंदासा पाकिस्तान में कब आया था, मैं जानता हूं किसको लेके आए थे, यूईटी का ही बंदा था। ठीक है, खुदा के वास्ते यार, लेट्स बी रियल। हम फरियादी बन के वहां चल जाए, दंदासा साहब बैठ के अपनी रिपोर्ट लिख के चल जाएंगे यार। लेट्स ग्रो अप, थिंक अबाउट इट। जी लुबना बीबी। जी, अस्सलाम वालेकुम। Just staying on Islamabad, the fact that the plan was made 60 years ago and was not updated, couldn't be updated till now, says a lot about master planning. कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि या विलिंगनेस नहीं है कि हम उस प्लान को अपडेट करें। ये ऐसा ही है कि एक घर में आप रह रहे हैं और एक वो आपको कहा जाए कि 20 साल का प्लान, 20 साल आपने जिंदगी के इस तरह गुजारने, तो हमारे पास ना वो डेटा होता है ना वो इंफॉर्मेशन होती है कि 20 साल बाद पॉपुलेशन कैसी होगी, कितनी होगी, उन्हें कितनी फैसिलिटीज चाहिए, कितने स्कूल्स चाहिए होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होंगी। हमारे पास वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेटा, एंड सिंस वी डोंट हैव दैट डेटा, हम प्रोजेक्शंस पे बेस्ड जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो इट डज नॉट, ये बेन टुडेरियन नहीं कहा कि मैंने अपनी लाइफ में, आई हैव सीन इन माय लाइफ दैट 90% of my own projections have gone wrong. So वही बात है कि खुदा न ख्वास्ता खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे पास डेटा नहीं होता, वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। जैसे मार्केट, जो इकोनॉमिक मार्केट्स के साथ सबसे बड़ा इशू इंफॉर्मेशन का है कि उनको सेंट्रली प्लान नहीं किया जा सकता। मास्टर प्लानिंग में भी वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो व्हाई स्टिक विद इट। और ये बात कहना कि नहीं जी इसमें 20 साल के बाद अपडेट करने की वो है प्रोविजन, वो नहीं होते अपडेट 20 साल के बाद भी, वो 40 साल के बाद भी अपडेट नहीं हो रहे। और अगर अपडेट हो रहे हैं तो उसमें भी वही प्रॉब्लम्स, अब मतलब वो आप पुरानी प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर रहे। आपने क्यों एक इस्लामाबाद को एक एज लो डेंसिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बनाया हुआ है कि वहां सिर्फ एलीट जो क्लास जो है उनको एक अपना ग्रीनरी और मार्गला का व्यू चाहिए। बिल्डिंग्स को इसलिए नहीं हाई राइज होने देते कि उनका मार्गला का व्यू अपसेट होगा। एंड उस वक्त सोचा गया था कि जी जो ये जो है डोमेस्टिक हेल्प या लेबर जो है वो पिंडी से आएगी, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा कि 20 साल बाद, 60 साल बाद वहां के लोग जो आबादी होगी उनके अपने जो डोमेस्टिक हेल्प होगी उनके लिए रहने के लिए जगह चाहिए। मास्टर प्लानिंग इनमें से कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाता। थैंक यू। I think she's right, but again, I'll come back to the point that master planning can be facilitators, town planners can be facilitators, but there is always, again, somebody else who is making the decision as to how the city will be. And it's just that order. Otherwise, what would you have? A city growing organically and mutating itself? Do you think that is the right way for it to go? Because there are so many people that the city inhabits, and everybody has a different mindset, and a lot of people don't know how they want to live or what is better for them. But if not for playing God, and if everybody's a god in themselves, then what then does the city become? Would somebody like to answer that? I'm saying कि पिंडी का मास्टर प्लान पाकिस्तान की मोस्टली सिटीज ऑर्गेनिकली डेवलप हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद को अगर आपने प्लान भी किया तो यू कैन इम्प्लीमेंट द प्लान। CDA ने जमीन एक्वायर करनी थी, दे कैन एक्वायर इट। तो वो हमें उस वक्त अपनी कैपेसिटीज भी सोचनी चाहिए। ये जो जोन 4 और 5 की बात आप कर रहे हैं वो CDA ने एक्वायर करना था, अगर वो करते उसको ऑर्डरली डेवलप करते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अब जोन 4 and 5 एंड इवन जोन 2 इज अ मेस। तो आपके जो जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट कराना है प्लान, एक तो उनकी कैपेसिटी कितनी है और उनकी मोटिवेशंस क्या है। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आप, जाहिर है कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस हाउसिंग सोसाइटीज बनाना, जमीन बेच के प्लॉट एक दूसरे को गिफ्ट करना, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। तो
आप अगर एक सिटी ज्यादा ऑर्गेनिकली डेवलप हो रही होती तो बहुत से प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करते हैं। इसीलिए दुनिया में शायद नेबरहुड प्लानिंग की तरफ लोग जा रहे हैं कि और उसमें पब्लिक हियरिंग भी होती है जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। लेकिन मास्टर एक चंद लोग बैठ के 20 साल के लिए एक सिटी का नक्शा बनाए, ये आई थिंक इस पे बन तो जाता है प्लान, उस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आप इस्लामाबाद के लिए भी यही कह रही हैं कि इस्लामाबाद का प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सका इन इट्स ट्रू सेंस जिस तरह डॉक्सियाडस ने प्लान किया था। तो फिर आई नो कि थोड़ी बहुत आपको बताना होता है कि इंडस्ट्री या मतलब एयरपोर्ट के करीब हाई राइज बिल्डिंग ना हो, लेकिन वो लूज कंट्रोल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स नहीं होते कि आप लोगों को ब्रीथ करने की जगह ना दें। दैट्स माय पॉइंट। All right, अच्छा I would मैं agree. अच्छा मैं अगर इस टाइम का फायदा उठाते हुए 2 कमेंट ऐड कर दूं। एक तो ये कि ऐसे नहीं है कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान रिवाइज नहीं हुआ, 1992 में रिवाइज हुआ, वो सीडीए ने ओन सोर्सेज से किया था। और दूसरा रिवाइज हुआ था 2004 में और 5 में, ये एमएमपी ने किया था। अच्छा, रिवाइज हुआ है सीडी जो, और ये भी नहीं है कि मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एग्जैक्टली आज जो जोन 1 है ये एग्जैक्टली वो है जो डॉक्सियाडस प्लान करके गया था। तो 92 की में जो चेंजेस की गई हैं उनकी रोशनी में जोन 4, 5 एंड जोन 2 की चीजें बनी हैं। और जो एमएमपी ने इस मास्टर प्लान को स्ट्रक्चर प्लान में कन्वर्ट करने की यानी मेन एवेन्यूज निकाल दी जाए, हाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक हुआ है। अच्छा, दूसरा कमेंट मैं लाहौर के बारे में करना चाह रहा हूँ कि लाहौर के ऊपर हम जो नदीमुल हक साहब भी कह रहे थे कि बहुत बड़ी रिजर्वेशन ये है कि वहां ब्रिजेस बन गए, पैदल वाले के लिए मुश्किल हो गया। ये इसलिए हुआ 80s में, लाहौर 80s तक लाहौर के मास्टर प्लान को लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। 88 में एक ट्रांसपोर्टेशन स्टडी होती है और उस ट्रांसपोर्टेशन स्टडी को जो कि फॉरेन फंडेड थी, सब्सिक्वेंटली स्ट्रक्चर प्लान का नाम देकर मास्टर प्लान के ऊपर इंपोज कर दिया गया। आज लाहौर जो भी है वो उस ट्रांसपोर्टेशन स्टडी जिसे स्ट्रक्चर प्लान 88 कहा जाता है वो है। और उस ट्रांसपोर्टेशन स्टडी सर, वो ट्रांसपोर्टेशन स्टडी किसने की थी? वो सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स ने की थी, उसमें एक सिंगल भी प्लानर नहीं था। नहीं, कौन था ट्रांसपोर्टेशन? सर मैं सिर्फ ये जायका फंडेड थी, जायका फंडेड ना। आज सिर्फ ये है कि अगेन कोई बाहर से बंदा आके जो आपके शहर को जानता भी नहीं वो करता है। मसला ये है हमारा, इसीलिए मास्टर प्लानिंग होनी नहीं चाहिए। जी अमरगन साहब। सर, ये डॉक्टर नवीद साहब से मैं थोड़ा सा गैर मुतमईन हूँ। डॉक्टर साहब अगर फोकस करें, इन्होंने अचानक कह दिया जायका का काम ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ने किया था। जायका ने जो आपको काम करके दिया था सिर्फ उन्होंने डेटा लिया था जो कि हर जगह लेने की जरूरत होती है। बेसिकली देयर वाज एन अट्रैक्शन डेटा उन्होंने ओडी किए थे पूरे सिटी में, और ये हमने हर सिटी को कराना चाहिए। इसी से आपको पता लगता है कि आप सर्विसेज कैसे देंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके पास सुई गैस की भी, बिजली की भी, पानी की निकासी की भी। डॉक्टर साहब आपने बात बड़ी अजीब सी कर दी। ट्रांसपोर्ट इंजीनियर इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग टीम। I mean, I'm really amazed that, you know, a person at your level says वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ने किया। नदीम साहब मजाक करने लगता है कि मजाक करें, but we're not joking here. Thank you, sir. अच्छा जी, जी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? जरूर जरूर। अच्छा, नहीं वो देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि लाहौर जो 88 का स्ट्रक्चर प्लान है वो मास्टर प्लान है ही नहीं है, वो मास्टर प्लान में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। जो जायका ने डाटा इकट्ठा किया उसको मिलाकर एक स्ट्रक्चर प्लान का नाम दे दिया गया जिसमें ये था कि मेन कॉरिडोर्स निकाल दिए जाएं, उसके गिर्द ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, अब उससे क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, सिटी की शेप फ्रॉम रेगुलर शेप टू लीनियर कन्वर्ट होगी और वो लीनियरिटी कहीं अब एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। यस, transportation engineers are important part of the team but cannot lead the master planning। अगर वो लीड करेगा तो फिर यही होगा जो लाहौर के साथ हुआ है। This is what I am trying to say. I am not joking. It is a serious and grave concern कि 88 के स्ट्रक्चर प्लान ने लाहौर शहर को बागों के शहर से हटाकर एक लीनियर सिटी में कन्वर्ट करके और उसको लिवेबल ही नहीं रहने दिया। अब आप चूंकि वो
मास्टर प्लान से बना ही नहीं है, वो बना ही एक ट्रांसपोर्टेशन स्टडी के ऊपर है, लिहाजा आपको हर जगह रोड नजर आता है, हर जगह ब्रिज नजर आता है। अगर वो मास्टर प्लान बनता तो आपको लिवेबिलिटी नजर आती, आपको उसमें इंसान नजर आते, आपको उसमें घर नजर आते। अब हर चीज सिंक कर गई है, डूब गई है, सिर्फ एक रोड डोमिनेंट है, बिकॉज कि वो 88 का स्ट्रक्चर प्लान है ही ट्रांसपोर्टेशन लेड structure plan of Lahore. I'm really sorry for the technical glitch, and thank you, Dr. Naveed and Sabuhi. I'm just with the curious about the point you are making again and again. Yes, it is. We have talked a lot about master planning and all that, but my basic question is, what are basic concerns which I has is the master planning versus real estate mafia. Because आज अगर आप लाहौर को देखें या किसी भी मतलब किसी भी जगह पे चले जाएं आप, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वहां पे रियल एस्टेट माफिया बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, जिस सिटी में आपको सर्टेन अमाउंट या सर्टेन लेवल तक आपको एक लैंड रिक्वायर होती थी, उतनी रुपीस में आपको मिल जाती थी, लेकिन आज उसकी प्राइस डबल हो गई है। ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मास्टर प्लान। अब जिस तरह के मैं आपको एक सर्टेन एग्जांपल दूं, 2010 में जब आप बात करते थे कि मैंने लाहौर में यार शौकत खानम के पास जाना है, तो लोग कहते थे यार वो तो बहुत दूर है, और आज वो एक किस्म का लाहौर बना हुआ है। उससे आगे लाहौर पता नहीं जाती उमरा तक का प्लॉट तक, उसके बाद उस तरफ देखा जाए तो बहरिया टाउन तक, पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है। तो इट्स अबाउट द मास्टर प्लानिंग और इट्स रियल एस्टेट माफिया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप मास्टर प्लानिंग को इतनी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो दैट इज प्रमोटिंग दैट रियल एस्टेट माफिया एज वेल। सो प्लीज गिव योर टेक इन दैट पर्सपेक्टिव। थैंक यू। I agree with you. Jeez. Gee. Master planning should look at it. And just like New York, where there are places where we have rent controlled apartments, so that real estate doesn't go over a certain amount of affordability for a lot of people. Again, it is the policy and decision makers who are supposed to think this through. Real estate mafia is merely taking advantage of the loopholes that the cities have or the city master plans have. They are trying to provide a safer environment, which is what most of these cities, proclaim. It's a safe environment, it's a great lifestyle, and which most of our urban population, lower middle to upper middle class, would want to subscribe to a certain way of living, a safe haven, and this is what they are banking on. Because our cities and do not have the capacity and the capability to have provided it for them. Case in point, Bahria Town, or case in point, DHA, etc., etc. Land prices should be controlled by the government. That is where policy and decision making comes in. That is where you lay out a city so that it does not become unaffordable for everybody. And wherever there is infrastructure, land price will increase. For example, 20 years ago, on Driven Road, you could have bought a piece of land which was semi-agricultural, but now that has been converted into residential area or commercial area, therefore increasing its cost and making it not very affordable. You think about these things in advance. You think about these things, you plan them, and you make policies. What happened in 2008, the world over, the economic crisis was also a resultant of poor planning or hedonistic capitalism, where a lot of loans were given out for people to buy houses. And when the demand and the subsequent economy wasn't able to meet with that sort of a development, because it was a fake development, the market crashed, which all over the world, it was pushing inventory for the sake of pushing inventory, what these real estate people are doing. Again, I'm going to go back to people who are in charge of making policies, think tanks, which should inform the government, because yes, we are in a democracy and that is the institution that we subscribe to think about this and not let it happen.
That is my thought process on this. अच्छा, Thank इन you, कंटिन्यूटी Saburi. ऑफ हाँ जी बोले. जी इन कंटिन्यूटी ऑफ सबूई आर्गुमेंट, रियल एस्टेट मार्केट भी ऐसे ही मार्केट है जैसे बहुत सारी और मार्केट्स हैं। इसमें भी वही तमाम मार्केट फोर्सेस प्रिवेल करती हैं जो बाकी मार्केट्स में करती हैं, और अगर कार्टेल बन जाएगा किसी भी मार्केट में तो वो माफिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एज ए मार्केट कंट्रोल करने की जरूरत है। ये इल्स एंड इवल्स ऑफ मास्टर प्लान में शामिल नहीं है। यस, देयर आर मेनी इल्स एंड इवल्स ऑफ मास्टर प्लान, लेकिन एटलीस्ट ये वाला इल्जाम ना दें। अच्छा, एक बात होगी। दूसरा, मैं अगेन लाहौर मास्टर प्लान पे जाता हूँ। लाहौर का जो 1966 का मास्टर प्लान है ना, उसका टाइटल है मास्टर प्लान फॉर ग्रेटर लाहौर, और उसकी एसेंस ये थी कि लाहौर का अब हम एक ग्रेटर साइज प्रपोज कर रहे हैं, इसके बाद इसकी बाउंड्री है और इस बाउंड्री के बाहर लाहौर नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रीन एरिया रहेगा जो कि इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दूध, दिस दैट हर चीज सप्लाईज आएंगी जहां से। अब 88 में आके क्या हुआ, मास्टर प्लान को कन्वर्ट कर दिया गया ट्रांसपोर्टेशन प्लान में, इन द लाइट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन स्टडी, और उस स्ट्रक्चर प्लान ने मास्टर प्लान या लाहौर की बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। जब किसी घर की चारदीवारी गिर जाए तो फिर उसके अंदर हर चोर चक्का आ सकता है। तो लाहौर के साथ यही हादसा हुआ है। और मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है, बल्कि ये हाईलाइट करना है कि हम असल इशू की तरफ जाएं कि हादसा हुआ कहां पे। इस हादसे के बाद फिर लाहौर हर रोड के साथ फैलता गया, और वो वहां तक फैलता जाएगा अगर ना रोका गया तो जहां तक वो रोड जाएगी। अब एक दो रोड ऐसी भी हैं जो इंडिया तक जाती हैं, इंडिया के अंदर जाती हैं, तो फिर लाहौर उस रोड के साथ साथ इंडिया तक जाएगा। एक रोड कसूर तक जाती है, वो उस रोड के साथ साथ। जब हम किसी शहर की बाउंड्री को तोड़ देते हैं, उसकी ब्लॉक शेप को खत्म कर देते हैं, तो उसके साथ वही हादसा होगा जो लाहौर के साथ 88 से लेके 2002 तक हुआ। अब 2002 का जो मास्टर प्लान 98 में शुरू हुआ था और वो कंप्लीट 2002 में हुआ, उस मास्टर प्लान को नेस्पाक ने किया। उस के अंदर किया ये गया कि स्टार्ट ये किया गया कि लाहौर के स्ट्रक्चर प्लान को कंटिन्यू कराया जाएगा, और प्लस उसमें ये चीजें और ऐड कर दी। एक आदमी जो एक शहर जो पहले ही एक मन का बोझ नहीं उठा पा रहा था, इन्होंने वो मन का बोझ भी उसके ऊपर रहने दिया और 1.5 मन और डाल दिया। अच्छा, अब लाहौर का उस 2002 के बाद वो स्ट्रक्चर प्लान फिर कंटिन्यूड रहा। तो बात ये है कि हमें मास्टर प्लान में यस देयर आर बहुत सारे मसाइल हैं, बट अगेन मास्टर प्लान ही सॉल्यूशन है। उसके मसाइल को हल करना है, ना कि जस्ट लाइक जैसे डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम टू रूल बट बेस्ट इन अवेलेबल ऑप्शंस। मास्टर प्लान में बहुत सारी खराबियां हैं, वर्स है, बट फिर अगर ये नहीं है तो फिर ऑप्शन क्या है? प्लानलेसनेस इज नॉट द ऑप्शन। इस्लामाबाद के शहरी जानते हैं कि प्लानलेसनेस क्या होता है। जोन 4 में प्लानलेसनेस नहीं, बाराकऊ जो है वो प्लानलेसनेस का नतीजा है। बाराकऊ में प्लाट का रेट, मेन रोड के ऊपर प्लाट का रेट वही है जो F6 के अंदर है, लेकिन बाराकऊ में आप गुजर नहीं सकते, पंजेंट स्मेल आती है। लिवेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, गुजरना महाल हो जाता है। और F6 आप देख लें वो क्या है, वो वर्स प्लान था जिसे हम सब नापसंद करते हैं कि उसने इसको शहर की बजाय। बट अगेन जो मैम सबूई ने कहा कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये थी उस वक्त, जैसे आर्किटेक्ट एक क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके उसे एक प्लान की शक्ल देता है, उस वक्त डॉक्सीएडस और उसकी टीम ने क्लाइंट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ उनको ओवरसी कर रहे थे, और फील्ड मार्शल अयूब खान की सरबराही में एक कमेटी बनी हुई थी प्रोफेशनल्स की। उस कमेटी ने जो रिक्वायरमेंट्स अपनी मास्टर प्लानिंग टीम को बताई, उन्होंने उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए एक शहर डिजाइन किया। और उसके बाद फिर हर 20 साल बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम कुछ पैसे लगाएं, एक एक्सरसाइज करवाएं और उसको चेंज कर लें। बट अगेन जो मास्टर प्लान या शहर, चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, तो उसकी चेंज को कागजों में हो जाने के बाद अपीयर होते हुए उसको 10 साल लगते हैं उस चेंज को अपीयर होते हुए।
तो ये कुछ गुजारिशात थे। जी, thank you, Shah. जी थैंक यू मैम। मेरा सिर्फ एक कमेंट है ऑन व्हाट डॉक्टर नवीद जस्ट सेड। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी 12 कऊ की और एक प्लानलेसनेस की वहां पे, बट डोंट यू थिंक कि वो एक्चुअली इस्लामाबाद जो आप मास्टर प्लान के तहत बना या जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं वहां की प्लानलेसनेस या वहां का प्लान अपडेट ना होने की वजह से हुआ है? वहां पे उसकी वजह ये कि देखिए जैसे जैसे इस्लामाबाद बढ़ता गया और जैसे जैसे इस्लामाबाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, लोगों का यहाँ आना ज्यादा स्टार्ट हुआ, सो उसकी वजह से द डिमांड फॉर हाउसिंग एंड डिमांड फॉर लिविंग इंक्रीज विद इन दो सेक्टर्स। लेकिन क्योंकि वहां पे वही कनाल की 2 कनाल की कोठियां बन रही थी मेन सेक्टर्स में, बाकी जगहों पे जहां चले छोटे प्लॉट भी बने, बट स्टिल दैट डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल दैट वर कमिंग इन। और उसकी वजह से लोग वहां 12 कऊ या बाकी जगहों पे शिफ्ट होना शुरू, और आज तक वही चीज फॉलो हो रही है कि अब इस्लामाबाद में कोई मार्केट करता है, कोई नई हाउसिंग सोसाइटी या कुछ, तो वो चक्री के पास ही हो रही होती है। यानी कि अब आप इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर तक आपके पास 0 पॉइंट से लेके आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है, घर लेने की जगह नहीं है, अगर कहीं है भी सही तो अफोर्डेबिलिटी नहीं। तो ये जितनी सेटलमेंट्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ये प्लानलेसनेस का नतीजा है, ये एक्चुअली उस जगह की नहीं लेकिन इस्लामाबाद के जो मेन सेक्टर्स हैं उनकी एक प्लानलेसनेस की जगह है कि जहां पे वो दे फेल टू हाउस ऑल दोस पीपल। अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, कैपेसिटी भी नहीं थी, और उसकी वजह से सारा स्पिल ओवर इफेक्ट इस्लामाबाद के साइड के जो इलाके हैं उन पे आना शुरू हुआ। Thank you, Shah. Salman Shah साहब, आपका क्वेश्चन। अच्छा, मेरा सवाल है, नंबर वन, आई मस्ट अपोलोजाइज के आई वाज अ बिट लेट, बट जो भी मैं डिस्कशन अभी तक सुन रहा हूँ तो इसमें इट सीम्स के अर्बन प्लानिंग में कोई इकोनॉमिक प्लान, I think Shah Sahab का point जो था वो यही था कि do we actually consider economic factors? So I thought my last intervention and for this is कि जिस पे मुझे आपकी comments चाहिए दोनों के, कि देखिए इंसान एक जगह इकट्ठे होके why do we all agglomerate or why do we form clusters? I mean, the first thing is a sense of community, second is security, the third thing is economic opportunities, right? And then the rest of it follow. Now, because within community, then there's education, economics में बहुत सी और चीजें आती हैं, work की जगह ये सारा कुछ. So I think fundamentally I agree with what Naveed and you have said in another dimension outside of the term town planning. Because I think this term town planning is going to kill us, not just in Pakistan, but it's going to kill us everywhere. But so fundamentally देखिए कि जो अभी मुझे जिस पे है ना कि मतलब ये जो सोसाइटियां बनने दी, I always quote an example in my talks. मैंने श्रीफ्तुम को भी पिछले हफ्ते बोला था, मैंने कहा I did a drone flight over the traffic going to Bahria and to DHA and to this Gulberg Green or whatever. And I said, look, who benefited from this land evaluation, price escalation, etc. It was one person, a few people, and then subsequently the owners of the files. Nobody who now owns houses there. My in-laws have a house there in Bahria. They have been unable to sell that house for even the value that they actually, they thought this value was at. What I'm getting at is, number one, this is a big scheme of greed, and we need to stay. Why do we need to stay? Because unka effluent kahan jata hai? Then I'm the person who actually used to bring the kids to Lohibir Park, and at that time you used to have to go through Lohibir Park. जहाँ पे असल शेर आया था मेरी गाड़ी के पास, मुझे जब तक याद है, my wife was stunned, my spouse was stunned कि यार यहाँ तो वाकई शेर है, मैंने भी शीशे ऊपर. So the thing is, we destroyed a natural reserve, and then to make way, and now nobody remembers what is Lohibir Park. So number one, they have not only destroyed our ecosystem, our agriculture land, they have taken over our utilities. Take the example of the road, and this is the last thing. How dare they not pay for the extension of the Islamabad highway? How dare they do not pay for a subway that takes them from Bahria to Islamabad? I mean, how dare they? I mean, this is my question. Are we all idiots, or are we being taken for a ride? I mean, that seems to be very clear. तो ये आप so-called mega god-like planners को ख्याल नहीं आता. Thank you. अगर मैंने किसी का दिल दुखाना नहीं, but I just wanted to make a point. Thank you. Thank you, Amar. I think your point is well taken.
or it's something that goes beyond the profession of planners. So we have had a very healthy debate, and thank you, Sabuhi, and thank you, Naveed Saab, for coming. And inshallah, we'll continue this debate in future. So I'll end the conversation here. Thanks for your valuable input. Allah Hafiz.